So in continuation to calculation of higher active mode of vibration, now we are going to complete calculation for cis-1,3-butadiene, which is belongs to C2B.2. Cis-1,3-butadiene, that is one of the very important molecules, so it belongs to C2B point group. So in the case of cis-1,3-butadiene, you can have a look at here. C2B point group is there, so unshift atom is 10. If you are applying the operation, if you are applying the C2 operation, then all the atoms gets changed. So unshift atom remains 0, and in the case of sigma Vxz, again unshift atom or unchanged atom remains 0, but in the case of sigma Vyz, that is plane of your mobile, where all 10 atom remains unchanged. Now then you can simply do multiplication of these two, so you are getting 3n value. This is nothing but summation of those values which having translation component. Now so you are getting 10 times a1. Now we go for a2, number of times a2. So number of times a2 is equal to 1 upon 4, that is group number. Now see here it is a 30. So 30 into a2, that is 1 into coefficient here 1. So that is 30. Okay, the next is 0 into 0, it is 0 into anything is 0, so these two value are 0. Now last one, 10 into minus 1 into 1, that is minus 10, so it is 20. 30 minus 10 is 20 by 4. It is how many times a2? 5a2. Yes, it is a 5a2. Now then similar way you can go for b1 and b2, so it is a 1 upon 4. Now in the case of b1, so 30 into 1, that is 30. Then 10 into minus 1 into 1, that is minus 10. So again 20 by 4, that is called 5b1. And in the case of b2, number of times b2, where 1 upon 4, 30 into 1, that is 30. Other two terms are 0. 10 into 1, that is 10. So 40 by 4, that is called 10 b2. So these are the total mode of vibrations which you are getting, that is called 10a1 plus 5a2 plus 5b1 plus 10b2. This is called total mode of vibration. Now, in order to getting higher active mode of vibration, only vibrational mode, then you can subtract. See, from total mode of vibration, you can just subtract translation and rotational. So it's a 5a2 plus 5b1 . Into 5b1 plus 10b2 minus rotation, first minus translation. See, translation means XYZ. So A1, B1 and B2. Minus A1 minus B1 minus B2. And what's about rotational mode? That is minus A2 minus B1. Yes, and minus B2. That is you for rotational you go for RX, RY and RZ. Okay, जो भी बोर्ड है उसके सामने RX, RY, RZ लिखा है, so you can just subtract that one. That is nothing but your rotational mode. So you are getting vibrational mode. So 10A1 minus A1, that is 9A1. Now 5A2 minus A2, that is 4A2. And 5B1 minus B1, that is 3B1. And then B2 minus B2, that is called 8B2. But see, these are the vibrational mode. Now, in order to getting vibrational mode which are IR active, vibrational mode which are IR active, then your answer become 9A1 plus 3B1 plus 8B2. We have not taken A2. Why? Because A2 is because IR. there is no XYZ. There is no Yes. XYZ. Yes, in the case of A2, there is no XYZ, so A2 is IR inactive, and therefore
This is your answer. Okay, these are called higher active mode of hydration, which is multiple. Now, so similar ways in the case of ammonia, again, very simple job. See, this is the ammonia. This is the 3 hydrogen atoms which are on our side. You can say. Sir, character table comes from equation or some technology. क्या है character table? Sir, do character tables come from, sir, equations or the quantum equations or some technology? Character table is it comes from a certain way, like you are applying particular operation, how symmetry is changed depending on that plus and minus sign and Mulliken term is used. So that we will see later. After this, then we are having see one a separate topic that is called how to decide Mulliken term. Then you can find that. Okay, so character table is nothing but see, it is again literature. It is a mathematical calculative way. This is character table is written, but you are having see certain rules to write down character table. One of the rules I have already told. At least one entry should be such that all the entry are unity. And see, even in any entry is missing, then you can also calculate that also. So that type of problem we will take after this topic is clear. Okay, so don't worry about that. We will take care of that also. तो थोड़ा आपको आइडिया आएगा कि भाई कोई एंट्री मिसिंग है तो कैसे आएगी, ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप बीच में मेंटेन होती है, इस तरह से कैरेक्टर लिखते हैं. But see, this is ammonia is very important. This lone pair is on your side. So C3 is this is called principal axis, and you can have a 2 C3, that is C3 plus and C3 minus, and 3 sigma V plane are there. See, so each one is passing through hydrogen and nitrogen and lone pair. So in this way you can have a 3 sigma V. So now you tell me how many atom remains unshaped when you go for, if you go for particular E operation. आपके 4. पास 4 atom है, तो okay, all 4 remains unshaped. Okay, fine, all 4 remains unshaped. What's about C3? Whether it is plus or minus, whatever axis is there. If you do rotation, then how many atom remains unshaped? 1. Only one, that is nitrogen. Okay, because X is passing through nitrogen. What's about plane? You can take any plane. Sigma V plane. 2. 2. 2 atom, nitrogen and 1 hydrogen. Okay, so these are the unshipped atom. Now what is stress? Stress value is XYZ. You can do the summation. So it's here see it is a Z, here it is XY. So you can do summation of these two. That is 1 plus 2. Here it is 3. This is 3. Then in the next 1 plus minus 1, 1 minus 1, that is 0. 1, 0, that is 1. Okay, this is stress. So 4 into 3. If you do multiplication, so it is 12, 0, and 2. Is it clear up to here? Yes, sir. Okay, now It is you go clear. for number of times A1, number of times A2, and number of times E. आपको सी ये कैरेक्टर टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है ना, इट इज लिटरेचर, जैसे लॉक टेबल प्रोवाइड करते हैं इसी तरह दिस विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. So now see, you tell me what is group number, what is H value, order of group H is, coefficient of E is 1, here it is 2, and here it is 3, so it is 6. 6. yes. Or you can have a square of dimension, 1 square plus 1 square plus 2 square, so it is again 6, so it's a 1 upon 6. Now you go for doing see first A1, so you can take A1, 3n and coefficient, so 12 into 1 into 1, that is 12. Second term is 0, last term is 2 into 1 into 3, that is 6. So 18 by 6. 18 by 6, it's a 3A1. Now for A2, see 12 into 1 into 1, that is 12. Then see here it is 0, sorry, here it is 2. So 2 into minus 1 into 3. 2 into minus 1 into 3, that is minus 6. So it's a 6 by 6, that is 1.
So 1 times A2. What's about E? 12 into 2 into 1, that is 24. Plus 0 into anything is 0. 2 into 0, again it is 0. So 24 by 6, that is 4E. So total mode of vibration are 3A1 plus 1A2 plus 4E. How to getting vibrational mode? Vibrational mode is equal to total minus Rotational plus yes, vibration. and translation. Translation is Yes, so total mode are 3A1 plus A2 plus 4E minus rotational, that is Rx, Ry, Rz, that is A2 and E. Look at here. And translation is XYZ, that is A1 and E. So your answer becomes 3A1 minus A1, that is 2A1. A2 minus A2 becomes 0. Then 4E minus 2E, that is 2E. So this is total vibrational mode. And again, they are IR active. Both are IR active because XYZ are there. Any doubt in this topic? Is it clear? yes, sir. Yes, sir, clear. For now, before checking Mulliken terms, in reduction formula, I have already told that this is you are given reducing component, and question is asked like that. Calculate reduction component. Reduction component is similar way to whatever higher active mode of vibration we have calculated. See, such a type of question is already asked in SLATE exam, GSET exam. So if you want to calculate reduction components, so question is calculate reduction component. So here see, this is given, this is the tau, it is called reducible representation, and these three are irreducible representation. Okay, so how to calculate reduction component? Let exam में से question पूछे गए. So simply you can go for a reduction formula. Reducing component, that is number of times ith representation is equal to Ni is equal to, you can have a Ni is equal to 1 upon h into summation into n, that is coefficient Ni, into you can have a character of reducible representation into character of irreducible representation. Okay, so in this way you can calculate. This is called reduction formula. This is the reduction formula. So by using this reduction formula, you can calculate a reducible component, that is number of times A1. How to getting number of times A1? Simply you can go for group, first order of group, that is H is equal to 6. So 1 upon 6. Now see, you can take these three representation. Here you can take coefficient as well as A representation as well as this one. Okay, and its coefficient. These three things. वहां पे हम वो जो ट्रेस में से अनशिफ्ट एटम को मल्टीप्लाई करके 3n वैल्यू फाइंड आउट करते थे उनको कंसीडर करते थे. बट यहाँ पे आपको ये तीन चीज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लेना है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड कोएफिशिएंट. सो फर्स्ट वन इज 3 into 1 into 1 plus 0 into 1 into 2. Then you can have a 1 into 1 into 3. So 3 plus 3, that is 6 by 6. How many times A1? Number of times A1 One time. comes. Yes, one. Yes, good. Now what's about A2? 1 upon 6. Now 3 into, now next second time you can consider A2. Remember here, and have a A2. So you can go for this one. This is your A2. Okay, you can take A2 and rest of the other things remains as it is. So it's 3 into 1 into 1 plus 0 into 1 into 2 plus 0. yes, 1 into minus 1 into 3. So you are getting 3, 0,
minus 3. 3 minus 3, it is 0. So it's 0 times A2. What's about number of times C? It can take 3 into 2 into 1 plus 0 into minus 1 into 0. It's 0. 1 into 0 into 3, that is again 0. So 6 by 6, it is 1 good. So this is your reduction formula. See, reduction formula. Number of times it is called 1A1 plus 1E. This is reduction formula. So it is again similar calculation like we have taken in previous case. Okay. So this is called reduction formula. Is it any doubt? Yeah. No, sir. Okay, fine. So this is a tetrahedral, and methane is a molecules where you can do same calculation at your convenient time. So this is the methane. Okay, H. This is the tetrahedral geometry. So if you go for E operation, all the atom remains unchanged. Okay. If you go for E operation, then all the atom remains unchanged. So 5 atom remains unshaped for E operation. For C3, see how many C3 is there? 4. 4 C3. Each C3 is passing through 2 atoms, so 2 atom remains unshaped. C2 axis is in between. So carbon, it is passing through carbon, okay? So 1 atom remains unshaped. Again, S4 means rotation is given at 90 degree. That is by taking C4 axis followed by, and you can have Deflection. it again passing through 1 atom. Because we have already seen that S4 in a tetrahedral geometry. Okay, it is passing through center atom, and sigma D plane, that is called diagonal plane, that is also present. You just look at the molecule. So sigma D plane is present in 3 atoms. So 3 atom remains unshaped. You just go for tetrahedral geometry. So diagonal plane is also there in the tetrahedral geometry. So see, in this way you can write down the unshaped atom, and then after that, then you can see go for writing trace. That is XYZ is there. So which representation is there where XYZ value is there? Ramon and T2. Only T2 is there. Okay, only T2 is there. See, in this case, there is no XYZ, so you can have a T2. So you can write down T2 mode as it is, whatever mode is there. You can simply do summations. That is, you can take 3A2 or like that. Okay. So now trace is your trace become, this is 3, this is 0, minus 1, and 1. And you can do multiplication. So 5 into 3, 15, 0, minus 1, 3. Okay, now you can calculate number of times A1, A2, A3, all these things. So whatever the way we have calculated. Okay, is it clear? बाकी जो है वो आप आपके फ्री टाइम में आप कंप्लीट कर देना. तो मेन चीज थी दैट इज वी हैव ऑलरेडी राइट डाउन, जिसमें आपको जो अनशिफ्ट एटम्स और सारी चीजें जो लिखी थी, सो दैट इज वी ऑलरेडी रिटन. C2 में 2 एटम नहीं होंगे? C2 मिडल में से पास होगा ना, कोई भी इसी ऐसे दो हाइड्रोजन के बीच में से ऐसे जैसे आपने C2 एक्सिस को सिमेट्री एलिमेंट में भी करवाया था. आई शो यू. अल्टरनेट एक्सिस देखा था ना उस टाइम C2 भी
Absolutely, I have to change the geometry now. This is the plan, right? See, this is a C2. Look at here. C2 is, so how many C2 are there? It is, see, this is a C2. C2 means rotation is given at angle 180. तो यहाँ बीच में से पास होगी. तो इसको आपको बेटर वे देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हो C2. जो अल्टरनेट एक्सिस एलिमेंट था उसमें भी दिखाएगा इसी. Look at here. This is C3. The tetrahedral geometry. This is the tetrahedral. Okay. S4 is again passing through. Yes, sir. And see, this is here. Here you can clearly understand what is C2. See, look at here. ये जो बीच में बताया है ना, वो C4 तो 90 डिग्री के लिए, वहां से आप 180 पे रोटेशन देंगे तो अपने ये C4 तो है ही नहीं, ऑल्टरनेट एक्सिस के लिए कंसीडर किया हमने. बट आप यहाँ 180 पे रोटेशन देंगे तो आगे वाला जो है वो पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे आएगा, ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. तो उस हिसाब से ये जो है आपकी C2, इट इज पासिंग थ्रू ओनली वन एटम. So now, yes, in this way, you can write down this. But if you going to write down for C2V and C3V, then it is okay. No need to go for tetrahedral. That is for practice purpose only. Otherwise, up to C2V and C3V, it is enough. Okay, so you can complete it at your convenient time. Now, see next how this Mulliken term is written. So next we move to the how to write down the Mulliken term. So see, Mulliken term is a systematic way. See, first you see the character of Cn axis. If it is 1, then term use, Mulliken term which is used is character of Cn is 1, then the term which is used is A, and if it is -1, then it is B. Okay, then it is B. Now, after that, then you can go for reflection plane. If sigma plane is reflection plane is, suppose the value in the reflection plane is plus, it is a plus, then we use this term, we use subscript 1. And if sigma value is minus, then we use subscript 2. See, 1 plus sign indicate it is symmetric with respect to sigma plane, and minus sign indicate it is asymmetric with respect to sigma plane. So see, better way is, see, you can have a Cn and then you can have a sigma plane. Sigma plane is also there. See, sigma Cn is suppose 1. So which term we are using? Cn value is 1. So it is A. And suppose sigma plane is also having plus entry. The plus 1, that is plus entry. Then here A1. Script is A1. So what we can interpret this? We can say that A1 is symmetric with respect to both. Symmetric with respect to both Cn and sigma plane. Okay, so therefore we are using term A1. Now see, if you having Cn is 1 and sigma plane is minus sign, -1, then what is the term? A2. It is A2. called A2, yes. It is A2. So we can say that it is symmetric with respect to Cn axis and asymmetric with respect to sigma plane. Okay, it is asymmetric with respect to sigma plane. This is the interpretation.
Now then you can go for see minus Cn is a -1 and this is +1. What is the term? Minus B1. we are using term B, yes. So it's B and sigma 1 is +1, so it is B1. That is, we can say asymmetric with respect to Cn axis and symmetric with respect to sigma plane. Now both are -1. What happens? B2. It is a B2. So asymmetric with respect to both. Okay, so up to here it is a clear. So see, look at here, you just confirm it. See, it is A1. So both are symmetric. See, A2, so symmetric, asymmetric. B1, so asymmetric, symmetric, and B2, so both are asymmetric. Okay. Yes, sir. Now dimension is C positive, so it is 1, 1, 1, 1, 1. Dimension is a positive, so now see in the beginning we have already told that at least one representation is such that it's all the entry are unity. So see here 1, 1, 1, 1. Okay. First is A1 is a unity, so you can take all the entry 1, 1, 1. Now see second thing is in the character table, see you can do summation by multiplying with coefficient, then it becomes 0. Except one entry. फर्स्ट 0 नहीं होगी, बाकी सारी 0 होगी. C2 चेक करो आप. E1 या कोएफिशिएंट 1 है, C2 का भी 1 है, सिग्मा भी 1 है, सिग्मा भी x y z भी 1 है. तो ये 1 into 1 that is 1, 1 into 1 that is 1, 1 into 1 again 1, 1 into -1, यहाँ पे 1 into -1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल वैल्यू 0. 0. 0 वो सारे में 0 होगी. सी एक्सेप्ट A1, आप कोई भी देख लो, B1 भी देख लो. 1 -1 1 -1 इट इज 0. 1 -1 1 इट इज 0. ओके, ऊपर कोएफिशिएंट तो 1 ही है, सो सब में 0 होगा, सभी टेबल में ऐसा होगा. आप C3V का भी चेक कर सकते हो. सी ये C3V है. आप फर्स्ट को छोड़ दो, बाकी सेकंड चेक करो. A2 0 है या नहीं? A2 चेक करो, P चेक करो. जीरो है. माइक Yes, sir. माइक ओपन कर दो. इसका अनवांटेड वहां सॉन्ग आ रहा है, उसका आवाज आ रहा है. 0 ऐसी आपको ऐसे E का कोएफिशिएंट 1 है तो उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो. 1 into 1 that is 1. यहाँ 2 है, so 2 into 1 that is 2. 1 plus 2 it is 3, and 3 into -1 it is -3. So total value become 0. ओके, ये 0 रहेगी. तो सी दिस वे आप कैरेक्टर टेबल खुद कर सकते हो ऐसे. नाउ सी इसमें और आगे बढ़ते हैं मुलिकन टर्म में. आपको सिग्मा प्लेन भी देखना है, या सिग्मा एच या सिग्मा प्लेन कोई भी है. अगर सिग्मा एच प्लस है तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट वहां आपको सिंगल डैश यूज करना है, और माइनस साइन है तो डबल डैश. सिग्मा एच अगर प्लस है तो सिंगल डैश यूज करना है सुपरस्क्रिप्ट में मुलिकन टर्म में, और माइनस है तो डबल डैश. एंड जब आई है, आई इज पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, ओके, आई रिप्रेजेंट सिमेट्री. सो अगर आई प्रेजेंट है मींस आई में अगर प्लस साइन है, सो यू कैन यूज हियर सबस्क्रिप्ट चिराग. एंड आई माइनस है, उसका मीनिंग आई एब्सेंट है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आई नहीं है, तो उस केस में कौन सा यूज करेंगे हम? U. अनजीराड. ओके, यूज. सपोज आपको इसी तरह Cn सिग्मा एच प्लेन देते हो, आई, ये तीन चीज ऐसे प्रोवाइड करते हैं. और आपको अगर मुलिकन टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसका मुलिकन टर्म? Cn1 है तो कौन सी टर्म यूज करो? A. ए. गुड, इट इज ए.
सिग्मा एच -1 है, प्लेन -1 है, तो ए 1 लिखूं या A2? A2. A2 फिक्स है, A2। देन सी अगर सिंगल डैश लिखूं या डबल डैश सुपरस्क्रिप्ट में? सिग्मा एच -1 है, Double dash. डबल डैश ऐसे। देन जिराड या अनजिराड, आई देख लो। Ungitant. Yes, so this is a full Mulliken term. A2U. What's about this one? इसके लिए Mulliken term लिखना, चलो। सर आप जहाँ लिख रहे हैं वहाँ सामने ये दिख नहीं पा रहा ये सर, ये मीटिंग का वो आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सर। ऐसा नहीं है, आपको सब में ऐसा है, नहीं होगा ऐसा। नहीं सर, नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपकी डिवाइस है ना, उसमें आप डबल क्लिक करके कुछ जो है ना फुल स्क्रीन कर दो, है ना, क्योंकि मेरी ओर से तो क्लियर है, तो सबको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आप केस में हो गया। आप ऐसा कर दो, जो मेरा है ना उसमें आप पिन कर दो, मेरा जो शेयरिंग है उसमें आप उसको पिन कर दो, तो पूरा मेरा ही दिखाई देगा, बाकी सबका नहीं। हो गया आपका क्लियर? सर फुल स्क्रीन में ना सर वो 1 -1 दिख रहा है, उसके ऊपर जो आपने रो बनाया ना वो सिग्मा जेड का वो। सर ठीक है सर, मैं वो देख लूंगा बाद में, आप करिए। हाइड कर दो, अगर ऑप्शंस को ऐसे दिखाई देते तो हाइड कर सकते हो, या तो एक काम कीजिए, उसको मेरे को पिन करो फिर से आप, है ना, तो हो जाएगा। सो -1 1 है और ये 1 है, तो इसमें सर B1G. यस बी Yes, आएगा, सिंबल B1 आएगा एंड जीराड आएगा, एंड सिग्मा एच 1 है तो सिंगल डैश 2। सो इन दिस वे सी यू कैन प्रेडिक्ट Mulliken term। तो यहाँ पे भी सी देखो, दिस इज ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप, तो यहाँ सारे सिंबल ऑलरेडी लिखे हैं। सो A1G इसलिए है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपकी C4 वो भी 1 है, सॉरी जो रोटेशन एक्सिस इज 1, ओके। एंड सेकंड थिंग इज rotation axis is 1, and you can have a I is 1, so it is a Girard. Perpendicular plane is also 1. Okay, so in this way you can have a next A2G. Actually, so see, and second thing is you can keep in mind, अगर से ये कैरेक्टर CN का 2 है तो उस केस में सिंबल हम E यूज करेंगे, और 3 है तो उस केस में T यूज करेंगे। T तक सिंबल यूज होता है Mulliken का। ओके, 1 है तो A और B, 1 है तो A और B, इसमें +1 है तो A, -1 है तो B। अगर कैरेक्टर 2 है सर तो उसके D नहीं होता। T3 में, 3 में कैरेक्टर 3 है अगर, तो उस केस में T यूज करेंगे। इसमें से कुछ कैरेक्टर 3 है तो उस केस में CN एक्सिस का, तो उस केस में हम ये भी यूज करेंगे। ज्योमेट्री CN एक्सिस लिखा है, या तो इन टेट्राहेड्रल में E कंसीडर किया है, यहाँ पे E जो है ना उसके हिसाब से लिखा है। मॉलिक्यूल जो है उसमें स्पेसिफिक पॉइंट ग्रुप है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस इज मोर देन 1 इन नंबर, तो उस केस में से E कंसीडर करेंगे, है ना। नॉर्मल केस की तरह नहीं, इस केस में E कंसीडर करेंगे CN की जगह। तो यहाँ देखो 1 है तो ये 1, अगेन 1 है तो A2, क्योंकि सिग्मा प्लेन, सिग्मा D जो है आपका, जो सिग्मा प्लेन ये +1 है, दोनों +1 तो A1, 1 -1 तो A2। इसी तरह यहाँ पे 2 है, दैट मींस ये 3 है तो T, T. ओके, एंड यहाँ पे भी 3 है तो T यूज T. करेंगे। भी ऐसे ही है, आपको तो सिंपल वो इसी तरह प्रोवाइड कर देंगे, और आपको इसके हिसाब से पॉइंट कम लिखना है, ओके। नाउ से हाउ टू गेट Yes, इन मिसिंग एंट्री। कोई एंट्री अगर मिसिंग है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे?
Before writing direct product, we go for missing entry. Suppose this आपको C2V के लिए कैरेक्टर टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, C2V के लिए, तो कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक ये चीज है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सी आपको मुलिकन टर्म पता है, यहाँ जो एलिमेंट्स है वो E है, C2 है, सिग्मा V एंड सिग्मा V डैश। तो आप सी A1 मुलिकन टर्म पता है, A1 A2 B1 B2, तो आप ऐसे लिख सकते हो। पहले क्या करोगे, A1 A2 में C1 का जो C2 का कैरेक्टर है वो ये दोनों 1 1 लेंगे, तो इट्स A1, 1 -1 तो A2, -1 1 तो B1 एंड -1 दोनों है तो B2। इज इट क्लियर टू हियर? Yes, sir. ओके, उसके बाद हमने बताया कि एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेशन शुड बी सच दैट इट्स ऑल द एंट्री आर यूनिटी। तो आप ये दोनों है वो प्लस ले सकते हो, बाकी सब में से माइनस एंट्री है तो वो कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद सी इसका रो में जो है समेशन 0 होना चाहिए, तो यहाँ 1 -1 आ गया, तो ई का ऑलवेज सी इज ए डायमेंशन, डायमेंशन प्लस होता है, तो यहाँ आपको 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ ऑटोमेटिकली -1 लिखोगे तभी ये दोनों 0 होगा। 1 1 -1 -1, यहाँ कौन सी चीज आएगी B1 ई के नीचे, यहाँ 1 1, यहाँ पे लास्ट में -1, -1. तभी सब 0 हो गया। ओके, और ये B2 में यहाँ पे 1 और लास्ट में भी 1, क्योंकि मिडिल में जो ऑलरेडी -1 है, तो तक जाके 0 होगा। तो इसी तरह से कैरेक्टर टेबल लिखना इजी है। और कई बार सी यहाँ पे आपको अगर मिसिंग एंट्री प्रोवाइड करते हैं, लाइक C3V, here E, then 2C3 and 3 sigma V is given, and you are given here C, you know that very well, in the C3V point to 1 A2 and E term are there, A1 A2 and E 1 1 2। सपोज आपको यहाँ पे कोई एंट्री मिसिंग दिया है, सपोज यहाँ पे X है और यहाँ Y है, आपको X एंड Y कैलकुलेट करना है। बाकी जो है मैं लिख देता हूँ 1 -1 0। So see, now you tell me how to getting X and Y. आप X and Y भी कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज X and Y? कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे? समझ लो, यहाँ पे भी ये एंट्री जो है ना वो मिसिंग है, यहाँ पे जेड है, आपको X Y Z कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? X Y and Z। फिर से यू गो फॉर सिस्टमेटिक, पहले आप Z फाइंड आउट कर लो। सो आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई H ग्रुप नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डायमेंशन। ये तो पता है ना, 5 इंपॉर्टेंस पॉइंट जो देखे थे उसमें। Yes, sir. yes, तो कितना है ऑर्डर ऑफ ग्रुप H? J square plus 2. J square plus 2 equal to. नहीं, कोएफिशिएंट का आप समेशन करके ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो ना, ये जो है, तो Yes. ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना आएगा? 6. J equal to 2. Yes, it is 6. It is 6. So H is equal to 6. So 6 is equal to now J square L plus 2. 1 square plus L2 J equal square to 2. square. That is called 1 square plus 1 square plus Z square. So you can have a Z. See, Z square is equal to 6 minus 2. That is 4. So Z is equal to 2 because dimension is always unity. Okay. So Z you are getting 2. Here you can have a value 2. How to getting X? How to getting X and Y? So see, X and Y is very easy to calculate. See, two representations are orthogonal with each other. So you can take A2 and A2 having see all the entry are known. See. So you can take A2 and E orthogonal with each other. So you are getting, simply you are getting that one, Y. So you can see simply take multiplication by dividing order of group. So it is a 1/6. Now
2 into 1 into 1 कोएफिशिएंट भी आपको साथ में लेना है 2 into 1 into 1 क्या होगा ये 2 कंसीडर करना है 2 और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उनको सो इट इज 2 इसके बाद y into 1 into 2 that is 2y and 0 into minus 1 into 3 that is 0 ओके ऑर्डर ऑफ ग्रुप की जरूरत नहीं है इसमें से या भी सकते हो या तो जरूरत नहीं है तो क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा रीजन है ये दोनों ऑर्थोगोनल है इसका मीनिंग इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा ऐसे सो 6 उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसके सामने ले जाओगे तो वो भी 0 हो जाएगा सो इससे 2 plus 2y is equal to 0 so 2y is equal to minus 2 so what is y -1 this has to become minus 1 now similar way you can go for a1 and a2 are orthogonal with respect to each other so you can getting x you can able to calculate value x a1 and a2 are orthogonal so you can do the multiplication that is 1 into 1 into 1 plus 1 into x into 2 that is 2x minus 1 into 1 into 3 is equal to 0 so that is 1 plus 2x minus 3 is equal to 0 so 1 minus 3 that is minus 2 goes on other side so it's a plus 2 so what is x x value is 1 is it okay is it clear Yes, sir. okay so see this is the way you can calculate see look at here it is a plus 1 it is a minus 1 it is a 2 whatever missing value you have calculated same you are getting so see this is another applications of that 5 important points or rules so now next we go for last point of this chapter that is called how to getting direct product okay how to calculate direct product so see direct product is it may be see a1 cross a1 a1 cross a2 or you can have a b1 cross b2 like that way you can calculate direct product so see आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप सपोज a1 क्रॉस a2 लगे तो इसमें आपको a1 और a2 इनके दो है जो a1 a2 उनके कैरेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है बाकी जो है दैट इज रिमेन्स एज इट इज okay you just multiply a1 with a2 and write down and then compare the result with the existing representation चलो a1 और a2 का कैरेक्टर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है this is 1 1 1 minus 1 1 1 minus 1 so 1 into 1 that is 1 1 into 1 again 1 okay and 1 into minus 1 that is minus 1 1 into minus 1 that is minus 1 now this representation is similar to which one it is similar to A2 a2 A2. and therefore it is a2 okay so therefore your answer that is a direct product of a1 cross a2 become a2 similar way you can calculate a1 cross a1 also here you can have a1 cross a1 also it is a2 its answer become a2 you can have a see a1 cross a1 तो आपको दो टाइम्स a1 लेना है तो 1 into 1 1 हो जाएगा 1 1 1 it is equal to A1 a1 so a1 cross a1 is equal to a1 you can have a a2 cross a2 what is its result
A1. It is also A1. 1 into 1, 1, 1, minus 1 into minus 1, again it is plus 1. And here also minus 1 into minus 1, that is plus 1, so it is A1. So A2 cross A2 is equal to A1. Okay, that is then B1 cross B2. These are the direct products. What is result of B1 plus B2? B1 into B2, that is 1. A2. Is minus 1 into 1, that is 1. 1 minus 1, that is minus 1. A2. Minus 1, that is minus 1. Let's say A2 good. So B1 cross B2 is equal to A2. So this is the way you can calculate direct product. For C3 V point group, you tell me what is E cross E? C3 V के लिए E cross E ये जो है ना 4 मार्क्स में नेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था. To calculate E cross E for C3 V point group. What is this result? What is E cross E? What is your first entry? कितना लेंगे आप? E 2 times लेना है. So what is value of E cross E? 2 into 2 कितने टाइम लगे? 2 E times. या 2 टाइम्स E लेना है तो यहाँ पे 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4. 4. Minus 1 into minus 1, that is plus 1. And 0 into 0, that is 0. तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन एक भी नहीं है. बट आपको ये देखना है कि E क्रॉस E कैसे आएंगे. कोई भी दो रिप्रेजेंटेशन का समेशन करके आएंगे, या तो कोई रिप्रेजेंटेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आएंगे, या तो माइनस करेंगे एक और दूसरे में से, या तो कैसे भी करके आप कैसे ला सकते हो, ये आपको अरेंजमेंट करना है. सो 4 चाहिए, सो फर्स्ट यू गो फॉर समेशन. आप समेशन करोगे A1 प्लस A2 प्लस E. व्हाट इज रिजल्ट? A1 4. 2 प्लस E, सो इट इज 4. आप इसके साथ मैच करो अगर मैच होता है हमें. A1 प्लस A2 प्लस E, इसमें सेकेंड में 1 प्लस 1 माइनस 1. 1. What is third entry? 1 0. minus 0, it is 0. So it is similar to this one. And therefore your answer become E cross E is equal to A1 plus A2 plus E. See, इसमें तो ऐसे ऑप्शंस दिए थे 2A1 plus E. एक ऑप्शन ऐसे था A1 plus A2 plus E. Then A1 plus 2A2 plus E. ऐसे ऑप्शंस थे. A1 plus 2A2. तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि हम कैसे चेक करें. तो आपको 1 बाय जाना है, इसलिए 1 by 1. यू कैन फर्स्ट चेक 2A1 plus E. जैसे आपसे इसको A1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, E में ऐड करोगे तो फर्स्ट एंट्री करेक्ट आएगी. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप E में ऐड करोगे तो फर्स्ट एंट्री इज 2 into 2, दैट इज 4. ओके. सेकेंड में क्या होगा? 2A1 तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ -1 है तो 2 minus 1, इट इज 1. इट इज ऑल्सो ओके. बट थर्ड में 2 into 2 plus 0, इट इज 2 plus 0 करोगे तो आपका जो आंसर है वो यहाँ 2 आएगा, बट यहाँ पे 0 चाहिए. सो इसलिए आप ये चीज नहीं ले सकते. 2A1 करके आप इसको E में ऐड नहीं कर सकते. ओके. इसी तरह आपको 1 by 1 चेक करना है. थर्ड चेक करोगे A1 और A2 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो भी आपका आंसर नहीं आएगा. तो इसी तरह से आपको 1 by 1 ऑल 4 एंट्री चेक करना है. तो ये सेकेंड जो है ना आपका रिजल्ट है, इट इज मैच विथ सेकेंड ऑप्शन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. So this is the way to write down the direct product. See, what is direct product of A1 plus A2 in this case? What is result of E2 C3 and 3 sigma V? चलो E कितना आएगा फर्स्ट एंट्री? कितना आएगा E? 1. 1 आएगा. Yes. 1 into 1, that is 1 group. What is 2 C3? 1 into 1. 1. Again 1. 3 sigma 1 into minus Then 1. negative 1. -1 आएगा.
Yes, sir. -1. तो कौन सा है रिप्रेजेंटेशन में 1 1 -1 1 A2. A2. So see A1 cross A2 that is equal to, you can have a A2. What is A1 cross E? 2 into 1, that is 2. -1 into 1, that is -1. 0 into 1 is 0, that is called E. Yes. So A1 cross E is equal to E. What is A2 cross E? E. E. So 2 into 1, that is 2 minus 1, again 0, so it is E. Very good. So in this way, you can calculate direct product. Is there any doubt? No, sir. Okay, so now this is just the end of this unit. Thank you very much. Any question? सर यहाँ पे जो सिग्मा एच बता रहे थे आप फिर से बता दीजिए सर, दिख नहीं रहा था यहीं पे। यस, इसमें जो है ना सिग्मा एच है वो यहाँ पे देखो वो थोड़ा -1 साइड में बताइएगा, ये जो टेबल बना है सर अभी अब भी दिखता नहीं दिख रहा। वो नीचे वाला टेबल नहीं दिख रहा ना, ऐसा है ना, नो सर। तो उसको मैं अलग से दिखाता हूँ लास्ट टाइम। सी दिस इज Cn, देन सिग्मा एच एंड आई। ये अगर -1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ -1 है, तो कौन सी टर्म आएगी? Cn -1 है तो टर्म ये आएगी या बी? यस सर, यस सर। तो सर ये बी माइनस में है तो बी होगा। A2 आएगा। A2. ये सिग्मा प्लेन जो है वो प्लस है तो बी 1 आएगा। ओके, अगर सिग्मा प्लेन माइनस होता तो B2 लिखते हैं, तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं, बट यहाँ पे प्लस है तो 1 लिखते हैं। उसके बाद सिग्मा एच सी यहाँ पे 1 है, प्लस है, तो डबल डैश लिखूं या सिंगल डैश? Double. सर 1 है तो सर सिंगल डैश। सिंगल डैश आएगा, और ये जो आई है वो माइनस है, दैट मींस ये सिमेट्रिक है, सिमेट्री एब्सोल्यूट है, सर यू होगा। हाँ जी, U. यू आएगा, है ना, नीचे लगाएगा। इसी तरह से ऐसे -1 है और यहाँ -1 यस है, सर। तो ये -1 वाला है, उसको आप यहाँ सिंबल बी यूज करोगे, Cn एक्सिस -1 है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे है, ये सिग्मा प्लेन भी -1 है तो यहाँ B2, एंड ये भी -1 है तो U, एंड सिग्मा एच माइनस है तो डबल डैश, इस तरह से। सो दीज आर द Mulliken टर्म। ओके, यस सर। और आपको ऐसे वैसे क्वेश्चंस पूछे, इतना प्रोवाइड कर दिया कि चलो यहाँ 2 C3 है, 3 सिग्मा भी है, बाकी कुछ डिटेल की जरूरत नहीं है आपको, इतना देते हैं। वो उसको इस हिसाब से पूछते हैं कि इसमें क्लासेस कितने हैं, ऐसा भी क्वेश्चंस नेट एग्जाम में पूछा गया था, नंबर ऑफ क्लासेस एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी, क्लास कितने होंगे और ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना होगा? How many classes are there? What is order? 6। Class is 6 लेंगे। Class is equal to number of irreducible representation। 3 होगा। 3 होगा, यह 3 चीज देखना, सी दिस इज 1 2 एंड 3, दोनों C3 एक्सेस एक क्लास में है, सेम रिजल्ट है, तीनों सिग्मा भी एक क्लास में, सो नंबर ऑफ क्लासेस आर 3, एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप? यस सर, 3 + 2 + 1। It is 6, yes. Okay, so now is there any doubt? No. यस सर। Fine, so this is just the end of this molecular symmetry and group theory. So this chapter is over. Thank you very much for hearing.